Good morning students, my name is Suvas Vora, Assistant Professor of Electrical Department at Swaminarayan Institute of Technology. So, we are already started the Indian constitutions and start with the new chapters, chapter number 4, the fundamental rights, यानी कि बेसिक जो होते हैं हक उसकी बात है. And the today's topic is introductions and the human rights. So constitutional bill of the rights for the government policy making the behaviors and the conductions of the citizens is discussed in detail in the previous lectures. हमने गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है सिटीजन्स के लिए वो हमने देखा था. सो इट इज़ द कंसिडर एज अ एलिमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस विच वाज डेवलप्ड बिटवीन द 1947 and 1949 by the Constituent Assembly of India. So Constituent Assembly of India, which was developed in 1947 and 1949. So the fundamental rights are defined as the basic human rights of all the citizens. These rights defined in the part 3 of the constitutions applied the irrespective of race, place of birth, religions, caste और genders. So जो फंडामेंटल राइट्स है वो सबके लिए सेम है. कहाँ पे बर्थ हुआ या रिलीजियन या कास्ट या जेंडर जेंडर्स जो है वो डिपेंड्स नहीं करती है. सो दी आर द इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स सब्जेक्ट और स्पेसिफिक restrictions. So the directive principles of the state policies are the guideline for the farming of law by the government. So it means that the fundamental rights or fundamental duties are defined as the moral obligations of the citizens to help the promote a spirit of patriotism and to uphold the unity of the India. यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो जनरली डिफाइन होती है द obligations, moral obligations of the citizens जो और help the promote the spirit यानी कि जो ग्रंथ है या जो कोई धर्म है of the partisans and uphold the unity of India. Now the main point is the human rights. So the all human being persons who are entitled to rights are called the human rights. So human rights are defined for the all persons who are entitled to the राइट्स यानी कि जो पर्सन से उसके खुद के जो हक है उसको बोलते हैं ह्यूमन राइट्स. सो देयर आर दी राइट्स टू हैड कम फ्रॉम द ह्यूमन डिग्निटी एंड द सेल्फ एस्टीम. सो यूनिवर्सली डिक्लेरेशंस ऑफ द ह्यूमन राइट्स. नाउ डिस्कस ऑफ द ह्यूमन राइट्स. सो दिस वाज announced by the United Nations General Assembly of the
United Nations in the year 1948 1984 1948 में ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अनाउंस हुआ था. सो दिस इज द फर्स्ट अनाउंसमेंट ऑफ द ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनली एंड इट इज़ नोन एज द इंटरनेशनल मेगा कार्टा. So declarations has 13 paragraph in four parts. Now start with the 13 articles यानी कि paragraph. So in the first two paragraphs are the fundamental principles. So article number 1, the all human beings are free from the birth and equal right. जो भी ह्यूमन्स है, इंसान है, वो कहीं पे भी जन्मा हो और वो जो सबको इक्वली राइट्स यानी कि हक दे. देन आर्टिकल नंबर 2, एवरीवन इज द इंटाइटल्ड टू ऑल राइट्स एंड फ्रीडम. सो सबको खुद के हक और फ्रीडम होती है, जैसे कि स्पीच या कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि हमने चैप्टर में देखा था लास्ट चैप्टर में कि समाजवादी प्रजासत्ताक देश है हमारा, इसलिए. देन आफ्टर द सिविल राइट्स आर गिवन इन द पैराग्राफ 3 to 21. सो स्टार्ट विथ द आर्टिकल नंबर 3. सो आर्टिकल नंबर 3 इज रिप्रेजेंट द राइट टू लाइफ, लिबर्टी and securities. Then article number 4, the freedom from slavery and bondage. Then article number 5, freedom from the torture and inhuman punishments. Then article number 6, the right to identifications as a person before the law. Article number 7, the right to equality before the law. Then article number 8, right to judicial remedies. And 9, the freedom from the arbitrary arrest. Then article number 10, the right to the fair trial and the public hearing. Fair trial means के पूरी तरह से जो भी है वो सबकी बात सुनना, एंड वो भी पब्लिक हायरिंग कर सकते हैं. पब्लिक हायरिंग यानी कि जो हम जनता की अदालत या जो भी है उसमें हम उसको बोल सकते हैं पब्लिक हायरिंग. द राइट टू बी इक्विटी, यूनिटी और दोषी कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट इज रिच्ड. Then right to privacy. Then right to freedom of movement, right to asylum, right to nationality, then right to marriage and family protections, then right to own properties, then freedom of the thought, कोसाइंस एंड रिलीजियंस. ये जो है फ्रीडम फॉर द ऑफ थॉट, कोसाइंस एंड रिलीजियंस जनरली यहाँ पे ही एप्लीकेबल है ये, क्योंकि सभी जगह पे आप अपने आइडियाज़ नहीं दे सकते. देन रिलीजियंस नहीं चलता है. देन आर्टिकल नंबर 19, द फ्रीडम ऑफ द ओपिनियन, एक्सप्रेशंस एंड एसोसिएशंस. देन 20, द फ्रीडम of the assembly and the associations. Then 21, the right to partner in the government and equal access to public service. यानी कि गवर्नमेंट के लिए भी गवर्नमेंट में आप पार्टनर्स भी हो सकते हैं और इक्वल एक्सेस पब्लिक का सर्विस भी दे सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट सर्विस भी दे सकते हैं. नाउ द आर्टिकल नंबर 22 to 27 are the economic, social and cultural rights. So article number 22, right to the social securities,
Then 23, the right to equal pay work and similar work, right to rest and leisure, then right to a good standard of living, then right to education, the right to participate in the cultural life of the community. So these are the human rights. So in the last one, the article number 28 is everyone is the entitled to the socials and the international orders, and the 29 is the above the rights and the freedom may be limited for the following some purpose. So some purpose means the recognize and the honor of the right and freedom of the unjust, यानी कि किसी के साथ अनजस्ट हुआ है तो उसके लिए फ्रीडम्स हैं, and to meet the need of the morality, public order and the general welfare. So these are the human rights, यानी कि सबके हक की बात की है जो यूनिवर्सली डिक्लेयर हुआ है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द इंटरनेशनल बिल ऑफ द ह्यूमन राइट्स. सो यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस ऑफ द ह्यूमन राइट्स वाज subsequently the split into the two separate conventions. So first one is the International Covenant on the Civil and the Political Rights, and second one is the International Covenant on the Economic, Socials and Cultures. So these are the universally declared of the human rights for the international bills. So the human rights and the freedom contained in the universally declared has been further developed and the expanded in these two agreements, and the General Assembly of the Union National adopted both these agreements in the 1966. And came into the force in the 1976. ये जो दो है वो 1976 से फोर्सफुली अप्लाइड किया है, यानी कि सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के लिए, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के लिए, और वो धीरे धीरे एक्सपांड हुआ है 1976 यानी कि 1974 से लेके 1990 तक, 1976 तक. सो इन एडिशंस टू द अबव टू एग्रीमेंट, टू अल्टरनेटिव protocols of the International Convention on the Civil and the Political Rights were adopted by the Union National General Assembly in the 1966. So while the second alternative protocol was adopted in the years in 1989, so generally the International Bill of the Human Rights include the some rights, which one is following. The first one is the Universal Declarations of the Human Rights, then International Convention on the Civil and Political Rights, and it is also in the two protocols, then International Convention on the Economic, Social and Cultural Rights. Now these main three international bill will be divided. Now the international conventional, so international conventional means okay, they have the further classified. So international bill of the human right has been the individually the enhanced by the other international territories and declaration, यानी कि there are the conventions considered as the human rights instruments. They are either related to the particular human rights, to the particular vulnerable communities,
यानी कि ये जो है वो पर्टिकुलर ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट की तरह के है और पर्टिकुलर ह्यूमन राइट्स इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए भी है. So the following lists are the most important agreements. In the 1966, the agreement on the eliminations of all the racial discriminations. Then 1979, the agreement on the eliminations of all the forms of the discriminations against the women. So in the women's, the agreement on the protections against the harassment and the other cruel, inhuman or degrading behaviors, हम जो misbehaviors बोलते हैं वो. Then agreement on the development rights and the agreement on the right of the child. Then after the agreement on the protections of the राइट्स ऑफ ऑल द माइग्रेट वर्क्स, यानी कि जो भी हम बोलते हैं कि बच्चों से जो काम करवाते हैं उस टाइप के उन लोगों के प्रोटेक्शंस के हक की बात है. एंड दी 2006 द एग्रीमेंट ऑन द राइट्स ऑफ द पर्सन्स विद द डिसेबिलिटी, यानी कि जो डिसेबल पर्सन्स है उसके हक के लिए 2006 में बिल पास हुआ. सो दीज आर दी conventional bills. Now, human rights in the India. The constitutions of the Indian provides the detailed information on the human rights, so that the constitution's principles and fundamental rights and the guideline principles of the state policies are reflected of the principles and the provisions of the Universal Declaration of Human Rights. ये जो भी है हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशंस में सबके हक के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं उसके प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स, देन गाइडलाइन प्रिंसिपल्स एंड अदर्स आर प्रोवाइडेड इन अ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. सो इट इज टू बी नोटेड हियर, in addition to the fundamental rights given in part 3 of the constitution, and some other rights has been granted in other parts of the constitution. So the constitutions of the Indian provides detailed information on the human rights. Many of laws and drafted by the parliament and the constituent assembly contain provisions for the human right, such as the protections of the Civil Act, which related to the eliminations of the untouchability. Then after the bonded the labor system, so that in this act the related to the preventing the explanations caused by the forced labor, यानी कि हम फोर्सफुली लेबर वर्क नहीं करवा सकते. देन मिनिमम वेजेस एक्ट. मिनिमम वेजेस एक्ट इज रिलेटेड टू द प्रिवेंशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशंस, यानी कि हमको पता है कि सबके वर्क के लिए बेसिक एक मिनिमम वेजेस यानी कि वैल्यूज़ है. फॉर एग्जांपल अगर हम कोई प्लम्बिंग का काम करवाते हैं या कड़िया काम करवाते हैं तो उसमें मिनिमम अभी हमको पता है कि अगर कड़िया काम करवा रहा है तो मिनिमम 800 रुपीज़ है पर डे. सो दिस एक्ट इज रिप्रेजेंट. आप ऐसा नहीं है कि 100 रुपीज़ में या 200 रुपीज़ में कुछ भी अमाउंट दे के उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा सके. तो दीज आर द मिनिमम वेजेस एक्ट. देन आफ्टर द Immoral Traffic Act. Immoral Traffic Act is related to the prevention of the human trafficking, यानी कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि किसी को मेंटली हैरेसमेंट करना या जो भी है. This one is the include in the Immoral Traffic Act. So all in the 1903 the Indian Parliament enacted the protections of the human rights, and according to the definitions of the human rights
In this act, the following rights are considered as a human rights. So, these are the act bit of the human rights. Now, we can talk about the women rights. अब हमने ह्यूमन राइट्स के बारे में देखा, बट some rights are given to the women rights. So the rights granted to the woman in India can be classified into the two categories: constitutional rights and legal rights. Now we can talk about the constitutional rights. Constitutional rights क्या है? जो constitutions के अंदर वुमेन्स के लिए दिए गए हैं, तो they are classified into the articles. So the first one is the Article 51. The state cannot discriminate any citizens on the basis of the gender only. आप जेंडर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशंस नहीं कर सकते. Then after the Article 15 Clause 3, the state is empowered to make the special arrangements for the woman. Generally, the state can make the provisions regarding the affirmations protections for the woman. Then after the Article 16 Clause 2, the state cannot discriminate against any citizens on the basis of the gender only in the matter of the public employment. यानी कि वुमेन कोई जेंडर पर्टिकुलर से आप डिस्क्रिमिनेशंस नहीं कर सकते हैं, ओनली मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. Then after the Article 23 Clause 1, the prohibits the use of the woman commands and forced labors. आप कोई भी वुमन को फोर्सफुली या जनरली काम नहीं करवा सकते. Then Article 39A recommended the state to provide the adequate livelihood resources for the both the men and women alike. यानी कि लाइफ की जो भी रिक्वायरमेंट है वो उसको मिलनी चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो. Then Article number 39D, which one the recommended the state to provide the equal pay for the equal work for both men and work. यानी कि इक्वालिटी की बात है यहाँ पे कि दोनों का जो भी वर्क है वो इक्वली होना चाहिए. Then after the Article 39E, which advised the state to stop the abusing the health and the power of male and the female workers. Then Article number 42 mandate the state to provide for the equitable and the human conditions of the woman and to provide the relief related to the motherhood. यानी कि जब भी कोई स्त्री प्रेग्नेंट होती है तो उसको उसकी हेल्थ के हिसाब से उसको रजा देनी ही पड़ती है, देनी ही चाहिए. वो हक की बात यहाँ पे आर्टिकल 42 में दी गई है. Then after the Article 15(1)(a) Clause E gives the every citizens of the India the basic duties to abstain from the participation and the dishonor the dignity of the woman. Then after the Article 243D Clause 3, at least the 1/3 seat should be reserved for the woman in direct elections, fill seat in the panchayats of all the levels. यानी कि हमको पता है कि nowadays the 33% seat will be reserved for the women. Then after the Article 243D Clause 4, at least the 1/3 of the total number of the panchayat chairman of the each level shall be reserved for the women. Then Article 243TT Clause 3, every municipality shall reserve at least the
seat for the women in direct elections recruitment booths. And the last one is the Article 243T calls for the 1/3 of the total number of the chairman of each the municipal shall be reserved for the women. So these are the rights of the women, which one is put in the constitutional rights. Now the legal rights. The first one is the protections of the woman for the Domestic Violence Act 2005. It is a law protecting the woman against all for the domestic violence. Then the Immoral Traffic Act 1956, that prohibits the trade of the woman or man who have to purpose of the कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लोरेशंस, यानी कि कोई भी आप फिजिकली हरेसमेंट नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट में पूरी तरह से केस होता है, वो है. देन आफ्टर द डाउरी प्रोटेक्शंस एक्ट 1961. डाउरी यानी कि जो जब भी मैरिज होते हैं तो जो लड़के वाले होते हैं वो लड़की वालों से जो भी चीज़ सामने से मांगते हैं उसको डाउरी बोलते हैं. सो इन द डाउरी एक्ट 1961 द प्रोहिबिट द टेकिंग एंड गिविंग ऑफ द डाउरी एट द बिफोर द मैरिज. इसमें ये एक्ट में आप नहीं, एक्चुअली द डाउरी प्रोटेक्शंस प्रोहिबिशंस में आप नावटे यू कैन नेवर गिवन द डाउरी. द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1960, मैंने जैसे ही आपको बताया था कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलने चाहिए. देन आफ्टर द इक्वल रिम्यूनरेशंस एक्ट 1976. सो द इक्वल रिम्यूनरेशंस एक्ट में क्या होता है कि इक्वल पे फॉर द मैन एंड वुमन फॉर द इक्वल वर्क्स एंड फर्दर दिस causes the prevent the gender discriminations on the basis of the gender in the recruitment and the conditions. Then after the dissolutions of the Muslim Marriage Act, which 1939, which gives the Muslim woman the right to demand the divorce. डिवोर्स वो सामने से ले सकती, पहले नहीं था ऐसा. Then after the Family Court Act 1984, which is provide for the family counseling for the speedy resolutions of the family dispute. यानी कि हमको पता है कि there are the lot of the family issues arise in nowadays. So this court will be easily and fairly decisions for the families. Then after the Indian Penal Code, so Indian Penal Code IPC, which provides for the protections against the woman, dowry, rape, kidnapping, then harassment and other crimes. Then Code of the Criminal Procedure COCP, which as in the 1973 makes the specific provisions for the protections of the woman, such as the persons who is provided for his wife and the arrest of the woman by the police and etc. Then after the Indian Criminal Marriage Act 1872, it is contains provide provisions related to the marriage and the divorce in the Christian community. Then the Legal Service Authority Act 1872, which provides for the free legal service of the for the women. Then after the Hindu Successions Act 1956 gives the woman equal access to males. Then after the Minimum Wages Act 1548, it does not distinguish between the separations of the minimum wages for the woman and men. In the National Communication Commissions for the Women Act,
1999 provides for the National Women's Commissions for the study and monitoring of the constitutional and the legal rights of the woman. So these are the women rights, legally and the constitutional rights. So if any query regarding this topic, you can call me. If any questions regarding this topic, you can mail me. My mail ID and the contact number is in your screen. Thank you.